Hello bachcho, let us look into the question. The question is saying that DNA is dependent on dash. So we have to figure out what is A. This is A. For synthesis of protein, DNA and RNA both can function as genetic material, but dash B, being more stable, preferred for the storage of genetic information. For transfer of genetic information, C is better. Choose the correct option for A, B, and C. Let us look into it. The key concept is central dogma. Basically, what is central dogma? We have seen कि जब डीएनए से पेरेंट डीएनए से ऑफस्प्रिंग डीएनए फॉर्म होता है सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन और डीएनए से डिपेंडेंट होके जब एमआरएनए फॉर्मेशन होता है या एनी काइंड ऑफ आरएनए का फॉर्मेशन होता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन राइट और जब इस एमआरएनए से फॉर्म होता है प्रोटीन in the form of polypeptide, this process is called as translation. And when we see that RNA से हो रहा है in the case of viral genome, this process is called as reverse transcription. तो हम बात करेंगे DNA is dependent on DNA किस पे dependent है for the synthesis of protein? It is dependent on the RNA. So we can take this and we can cancel out these options. अब हम दूसरे प्रोसेस की ओर बढ़ेंगे डीएनए एंड आरएनए बोथ कैन फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल क्योंकि डीएनए एंड आरएनए both passes the eligibility criteria or you can say they fulfill the criteria of being a genetic material. कौन से criteria है to be a genetic material? The first criteria that they should be able to replicate ताकि उनमें evolution हो सके. They should be able to follow Mendelian character, Mendelian principles. These were the criteria of being a genetic material. So they both function as genetic material. It is a true statement. But B being more stable, which one of them is more stable? DNA is more stable because the deoxyribose sugar at carbon 2 we see कि there is an absence of hydroxyl group. It is more stable and less reactive. तो हम कहते हैं कि डीएनए का ओवरऑल स्ट्रक्चर इट इज मोर स्टेबल देन आरएनए और इसी वजह से इनको प्रिफर किया जाता है फॉर द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए इनको यूज किया जाता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन डैश इज बेटर चूज ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं कि हम जेनेटिक कोड को स्टोर तो डीएनए में करते हैं बट टू ट्रांसफर इट हम आरएनए का यूज करते हैं because it is a better form of transferring the genetic information. So it will be RNA. Option C will be RNA. Option C is RNA. Option B is DNA. Now we can conclude that option B is correct. Let us look into it now. The final answer is option B is the final answer. Hope you all understood. All the best.